Hello Pythonic developer, this is machine learning project number 6 in which we will be creating a machine model that will predict heart disease. कि अगर एक हम डेटा फीचर इसे देते हैं तो वो प्रोवाइड करके देगा कि इस पर्सन को हार्ट डिजीज है या नहीं है. We will also create this website and we will put this image. After that we will be displaying the entire data set and we will also be displaying model performance on trend data as well as on model performance on test data. So this project gonna be very amazing. It will teach you a lot of things about machine learning project. Now first let me show you if I provide here features. Okay, let me copy feature. I'm selecting this one randomly and I'm inserting into the search bar. Control V and enter. As you can see here, it says that the person have heart disease. Let's say I'm going to change this one, Control C, and let me paste it right here, enter. And this person have heart disease. Okay, let's go down and select someone. Okay, let's say this one. Okay, Control C and Control V. Now here currently it says this person have heart disease, but if I enter, this person doesn't have heart disease. Okay, so we'll be creating this project end to end. First, what you have to do, just go and create a folder, and after that मैं आप लोगों के साथ ये कंप्लीट फोल्डर शेयर करूंगा गिटहब पे. लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. जो डेटा सेट है उसको डाउनलोड करो. डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इस डेटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है. सो क्लिक आफ्टर क्रिएटिंग फोल्डर, जस्ट क्लिक ऑन दिस अपलोड बटन and go to your download section, and this heart disease data set, just click on open, select it and click on open, and it will be open right here. After that, create a new Python 3 notebook. Okay, so let me create it and let me close this one. So what I'll do, अब इस प्रोजेक्ट का एक फ्लो होगा. ठीक है, सबसे पहले हम डेटा को इंपोर्ट हमने किया. अब एक डेटा की प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसको ट्रेन टेस्टप्लेट में देंगे, फिर से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड फाइनली वी विल बी क्रिएटिंग वेबसाइट फॉर इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल के एक प्लेलिस्ट मशीन लर्निंग उसको एक्सेस नहीं किया है तो उसको एक्सेस करो एंड वॉच ऑल द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स. सो लेट्स स्टार्टेड विदाउट एनी wastage of time. So import all necessary packages like numpy as an np and pandas for data cleaning as pd, and from sklearn.model selection it should suggest model selection import ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिसे हम डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करेंगे. ओके, अब इस प्रोजेक्ट पे हम लगाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो फ्रॉम sklearn डॉट linear model import logistic regression, and finally from sklearn dot matrices import एक्यूरेसी. मॉडल की एक्यूरेसी भी तो हमने चेक करनी है. ओके, सो ये सब चीजें इंपोर्ट करो. numpy क्या करता है, एक numpy एरे प्रोवाइड करता है. pandas डेटा को इंपोर्ट एंड क्लीनिंग के काम आता है. मॉडल सिलेक्शन क्लास से हमने ट्रेन टेस्टप्लेट इंपोर्ट किया ताकि हम अपने डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट सेट में डिवाइड कर सकें. एंड लीनियर मॉडल क्लास से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. ओके, and yes or no का है तो logistic regression would be best. You can also use other like support vector machine or random forest classifier. You can also check them. After that, finally we imported from class matrices accuracy score so that we could check the accuracy of our model. Now let me give a proper name to my data set, that is heart df will be equal to pd dot read csv and my data name is hot
this one, yeah. अब मैं इसकी फर्स्ट 10 rows चेक करता हूँ. Not had enter. Now here I don't know कि ये क्या हो रहा है. What is this column stand for? Okay, I don't know because there are a lot of biological terms like age of the person. This is very simple. We know sex. 1 stand for male, 0 stand for female. What is CP? What is test BPs? What is CHOL? What is FBPs? I don't know. So we have two options. Either we have to search about this data, or we have the simple option that is ChatGPT. Okay, so just copy and paste and enter, and it will explain everything. Okay, now based, oops, not this thing. Let me. I need explanation about data features. So as you can see here, let me zoom in a bit so that you can look at this thing. First column, the age of the patient in years. Second column, sex, that is the gender of patient. 0 stand for female, 1 stand for male. Okay, ChatGPT is the best. Third feature is CP, mean chest pan type. 0 stand for typical. Anigna, I don't know what is anigna. And 1 stand for a typical anigna. 2 non-anigna pen, 3 asymptomatic. So इस कॉलम में यानी चेस्ट पेन में हमारे पास 4 वैल्यू है 0, 1, 2 and 3. 0 stand for typical anigna. I don't know the pronunciation of this word. 2 stand for non-anigna pen and asymptom. Now these are the biological terms. Okay, so you have some basic knowledge about it before going to pre-process the data and train your model. Okay. Third is test BPPs, means resting blood pressure in millimeter. Okay, admission to the hospital. CHOL stand for serum cholesterol level in milligram. Okay, FBP stand for fasting blood sugar level. Okay, that is 120 milligram. 1 stand for true in this column and 0 stand for false. If that person has 1, it means that he has this fasting blood sugar level that is 1 greater than 120 milligram. If it is 0, then it has no fasting blood sugar level. Rest ACG means resting electrocardiographic result. Electrocardiographic is a biological term for heart disease. Okay, so if अगर यहाँ पे 0 है then it is normal, but if there is 1 then it means that person having wave abnormality, means something is not good about his heart. And you can also see the other stuff like the I don't know maximum heart rate achieved during exercise. Okay, this is the person that do daily exercise, then what is the maximum heart rate that is achieved after doing exercises. Then we have exercise include anigna 1 yes, 0 no. Old peak acid depression induced by exercise relative. So these are all the steps that are necessary. Okay, so you can check it out. Now let's come back and let's pre-process the data. Okay, तो मैं क्या करता हूँ जो हार्ट DF है उस पे एक शेप मारता हूँ and let me find out the shape. So this is a very small data set. It has only 303 data points observation, I means rows, but it has 14 features. Okay, features are these things you can also call columns, attributes, features. And from 0 until 303 we have 302 we have rows. Okay, so this is a small data set. Now you can also check a lot of things, but just let me check heart df dot is na. I just want to check the null value, so I'll put some so that it would provide me all the null value of all the columns. So in this case, in this data set we don't have any null value. तो हमारे पास ये डेटा बिल्कुल क्लीन है, कोई null value नहीं है. I think you can also check heart df dot info so that you can understand the null value. Here you can also check null value. As you can see, this age, sex, all the features don't have null value, but you can also see the type, that is int
integers, and there is float 64 for old pick, so you can check it out. You can also see the entries that are 303 started from 0 to 302. Now the main thing that we'll be doing is the statistic. Okay, let me zoom out a bit. So my heart df dot describe and run. Now this is very important. Okay, now if you don't know what is the statistic behind all these features, you can also copy and paste in ChatGPT, but let me explain it right here. We have all these features, 14 features, and the first value here, that is count, it represents the count of all the values within all these features. Okay, so in case of age we have 303 and for all others. Now मीन यहाँ पे अगर देखें तो एवरेज, हर एवरेज एज के कितने लोग हैं, तो 54 पॉइंट समथिंग एवरेज है एज का, सेक्स का 0.64, सीपी का भी आप देख सकते हो, टेस्ट ब्लड प्रेशर का भी देख सकते हो. ओके, सो यू कैन चेक. Now what is the standard deviation and what does standard deviation mean? Standard deviation mean that here you can see what is the difference between 63 and 37. What is the what we call it scatterness. Okay, इन दो वैल्यू के बीच में कितना फासला है. Same like this value, this is called standard deviation. So you can check standard deviation for all the features. Also mean value, percentile, second percentile, third percentile, and maximum value. So you can find it out. So I'll directly start. Now here you can see, first we have to identify that यहाँ पे target जो है target. This is your, not this one. Oops. Let me show you here. My heart df dot head. So हमारा ये column बहुत ही important है. Okay, all these features are input variables. Okay, providing all these input features, it will predict if I provide this cell. Okay, this cell, it must provide that this person has disease or not. And तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, जो हार्ट डीएफ है उसके अंदर जो हमारे पास टारगेट है, टारगेट, इन दिस टारगेट वी हैव 0 and 1, एंड इस पे मैं वैल्यू काउंट लगाता हूँ कि मेरे पास कितने वंस है और कितने जीरोस है. Okay, so 165 total, we have 303 data points in each column. So 165 we have हार्ट पेशेंट जिसको हार्ट डिजीज है, वो पर्सन जिनको हार्ट डिजीज है वो 165 है, and the person that don't have heart disease are 138. So we have 165 yes and 138 no. तो अब इसी ही चीज को मैं क्या करता हूं, इसको मैं बनाऊंगा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल. So x will be equal to heart df dot drop target, and I know that the axis of my this feature is 1 means column. So I am going to provide to store all the other feature 13 features within this x except target, because I'm going to give target to x min, y mean a dependent variable. So I'll simply pass here target. So if I check the shape of this, now all the other features are right here in x, but if I check y, I have just the last target variable or feature. Now let's talk about trend test split. So I have provided trend, double tap. Now you don't need to type always x trend, y trend. What you have to do, just type press shift and tab and click on this plus button and just scroll down, because we don't need to type everything again and again if you have some knowledge. But if you are a beginner, you have to type it. Okay, you have to type it.
So I'll copy this stuff and I'll replace all these things with it, and I'll give a setup. Okay, now my data set is very small, तो मैं इसको देता हूँ फिलहाल के लिए 10. I think it would be perfect. Yeah. So xtrend, xtest, ytrend, ytest. 80% data, 80%, 90% data will be stored in xtrend and ytrend, and 10% data will be stored for testing, xtest and ytest. Okay. Or let's say change it to 20, because this would be, so we are going to store 20% data in xtest and ytest. Okay, so let me run this now. Y is not defined. Yeah, this should be capital Y. So if I check the shape of xtrend, and so this is xtrend, as you can see 242, but if I check xtest dot shape, it has 61, because total we have 303. So if we are going to give 80% data to trend, then definitely 242 values will be right there, but 20% data will be stored in this. You can also check it for ytrend and ytest. So finally we have to train our model. So let me put here a comment: training model using logistic regression, and press escape button, and click on M. Okay, and it will give you this heading section, and then shift and enter. Okay, after that what we are going to do, we have to create an object by the name of model that will be equal to logistic regression. Now what is logistic regression? Okay, so why we are not using linear regression? So actually linear regression is mostly used for regression problem like continuous values, but logistic regression, support vector machine, random forest classifier are mostly used for classification problems. In case like this one, we have 0 and 1, true, false. Okay, in this case logistic regression is best. It will not skip if we draw a S-type shape. You must have some knowledge about logistic regression. Logistic regression क्या करता है, वो एक ऐसा कर्व डालता है कि ना तो यस वाले वैल्यू यानी 1 जो 0.5 से ऊपर होता है 1, एंड 0.5 से नीचे होता है 0, वहां पे कुछ पॉइंट्स अगर बहुत स्कैटर्ड है, बहुत दूर है, आउटर लायर है उसमें, तो वो उसको भी कैप्चर करेगा, उसको भी स्किप नहीं करेगा. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन. देन मॉडल डॉट फिट, जो मेरा 80% डेटा था, दैट इज xtrend एंड ytrend. आजा ytrend, इसी से मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूंगा. सो आई ट्रेन माय मॉडल विद मॉडल डॉट फिट xtrend एंड ytrend. एंड व्हाट आई डू आफ्टर दैट, आई क्रिएट y trend y spread. First we have to check our model prediction on training data set. Okay, so I'll simply say model dot predict. हमने xtrend ytrend पास किया था, तो मैं xtrend again पास करूंगा, because I'm going to check to train my model and also predict my model on this data. अब मैं कंपैरिजन करूंगा, जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो इसके अंदर स्टोर होगा, इसका कंपैरिजन करूंगा ytrend के साथ. तो देखते हैं, जो हमने एक रेस इंपोर्ट किया था उसके अंदर सबसे पहले ट्रेन ypred जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, और जो हमने बचा के रखा है वो है ytrend. इसके साथ कंपैरिजन करके मैं देखता हूं, मींस आई एम गोइंग टू कंपेयर प्रेडिक्टेड वैल्यू दैट हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय द मॉडल and that I have saved. This section is going for training data, okay, not for test. We will see test section as well. And this is 85. Okay, it's predict 85. Now what I'll do, I'll just cut these 2 lines of code from here, and I'll run this again. And this 2 lines of code, let me paste it here and run, and also paste here and run. Great. Now
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे. दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर टेस्ट. सो टेस्ट इंस्टेड ऑफ xtran वी हैव सेव्ड xtest. अब इन xtest को हम क्यों यहाँ पे पास करते हैं? लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर बिगिनर्स, बट फर्स्ट लेट मी टाइप दिस टेस्ट ypred and this should be y test, and let me run first, then let me okay. 88, that is perfect. Okay, so जब हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया विद द हेल्प ऑफ 80% डाटा दैट वाज स्टोर्ड इन xtran एंड ytran, तो हमने ये मॉडल के अंदर फिट किया. देन हमने मॉडल से प्रिडिक्ट किया ट्रेनिंग डेटा सेट पर, तो हमने xtran दिया, और फिर जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वो इसके अंदर स्टोर है. यू कैन आल्सो चेक बाय क्लिक इफ आई ऐड हियर न्यू सेल run ypred and run. This is the prediction of our model. Okay, I am going to compare this prediction with the ytran. Okay, with all these zeros and one. Okay, I am going to do this. तो इसके लिए मैंने एक्यूरेसी स्कोर के अंदर ये दोनों चीजें पास की और उसने मुझे 85 रिजल्ट दिया, which is good. The same thing I have done for टेस्ट प्रेडिक्शन. तो मैंने जो 20% एक्स टेस्ट के लिए बचा रखा था उसको कंपेयर, उसको उस पर प्रेडिक्ट किया और उसको अंदर स्टोर किया. फिर इस मॉडल की प्रेडिक्शन को कंपेयर किया, दैट इज टेस्ट ypred विद द सेव्ड डेटा सेट. दिस डेटा सेट मॉडल को पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है, तो इन दोनों की कंपैरिजन करने के बाद उसने 88 रिजल्ट दिया, दैट इज परफेक्ट. ओके, तो अब वेबसाइट क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ. सो बिफोर जंपिंग टू क्रिएट अ वेबसाइट, let me create here input data variable in which I'll take some input from user. So I have open, वो जो डेटा सेट था उसको ओपन करो नोटबुक में. जस्ट लास्ट फीचर को छोड़ के बाकी फीचर्स को कॉपी करो, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर लाइक दिस. अब चूंकि ये जो है ना ये इंटीजर वैल्यू है, तो मुझे इसको numpy array में कन्वर्ट करना है. So np df will be equal to np dot age array के नाम से हमारा फंक्शन है जो आपको numpy array में ये कन्वर्ट करके देगा. तो इसके अंदर ये इनपुट डेटा में पास करता हूं. अब मैं क्या करूंगा, मुझे चूंकि इस रिजल्ट का एक ही रो चाहिए, वी आर पासिंग जस्ट वन रो एंड वी नीड वन इंस्टेंस एज एन आउटपुट. So I'll simply use reshaped df will be equal to npdf that is converted, and I'll simply reshaped it. Okay, reshape. Okay, 1 and -1. Now what does it mean? फर्स्ट हमने यूजर से इनपुट लिया, फिर इसको हमने numpy array में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर किया. अब इस वेरिएबल को मैंने रिशेप करना है, बिकॉज आई नीड ओनली वन इंस्टेंस, वन रो, सो आई पास 1 -1. अब मैंने प्रेडिक्शन करनी है, तो प्रेडिक्शन विल बी इक्वल टू हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, एंड आई प्रेडिक्ट ऑन दैट यूजर इनपुट. सो रिशेप df. सो अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये जो प्रेडिक्शन है इसके तमाम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके ये इक्वल टू 0 है, then or let's say 1 or let's say 0, it means that this person don't have a disease, don't have a heart disease. So I'll simply print this person don't have a heart disease. But if there is one while taking input from user, then we have to print this person have heart disease. Okay, and hopefully let's run. So this person have heart disease. Let me, because the output feature is 1, so definitely. But if I take this feature, Control C, और अब मैं इसको इनपुट वाले वेरिएबल में स्टोर करता हूँ एंड पेस्ट एंड रन. तो दिस पर्सन हैव हार्ट डिजीज. सो समटाइम ये आपको
एरर भी देता है बिकॉज बिट और फिटिंग है हमारे मॉडल में। लेट मी चेक अनदर वन, दिस वन, this person, it should provided this person don't have a heart disease. Okay, run as this time this person don't have a heart disease. Okay, perfect, our model is perfect. Maybe there is some, हमारा डेटा सेट बहुत छोटा है, 303 values, so definitely model will not predict 100% correctly, but still it is perfect. Now it's time to create website for our model. So मैंने अपना PyCharm ओपन किया है. You just open up your PyCharm or VS Code or whatever editor you are using. Just copy all that code that we have just created right in Jupyter Notebook. तो मैंने क्या किया, जो भी libraries थे वो import किए, NumPy, Pandas, Sklearn. Then I imported the data set. Okay, and this step we don't need. उसके बाद मैंने x and y किया, जो इनपुट फीचर थे वो x, the same code I just copied, then x train, y train, everything, and after that I just use model dot create an object of logistic regression, model dot fit, the same thing I just copied. I just changed the variable name. Okay, x train prediction this for training data set and for y is this, but this time instead of printing I just store the accuracy in training data accuracy and test data accuracy, because I'm going to use this variables in my Streamlet library. Now आप लोगों ने क्या करना है, ये वेबसाइट हम स्ट्रीमलेट में बनाएंगे तो आप लोगों को दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी. फर्स्ट फ्रॉम पिल्लो, क्योंकि हमने एक इमेज भी डालनी है, सो फ्रॉम पिल्लो. पिल्लो लाइब्रेरी क्या करता है, ये इसके अंदर एक क्लास है इमेज, इंपोर्ट इमेज. ये आपको इमेज ओपन करने में, इमेज पाथ देने में काम आता है. लेट मी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, एंड आफ्टर दैट just import Streamlet as st. Now if you don't know how to install Streamlet, so go to your terminal and let me open another, then let me close this one. यहाँ पे आप लोग टाइप करो pip install Streamlet and enter. बट यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी आप लोगों को क्रिएट करना होगा, ठीक है. और उसके बाद इसको इंस्टॉल करो. इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इंस्टॉल करो पिल्लो. पिल्लो को आप कुछ इस तरह लिखना, पिल्लो, नॉट PIL, पिल्लो. तो ये करने के बाद इट्स टाइम टू क्रिएट वेबसाइट. सो लेट मी पुट हियर अ कमेंट, बट लेट मी जूम इन अ बिट. I will also website. I'll also share all these things, app, Jupyter Notebook and data set in this video description. Okay, तो आप सिंपली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. अब सबसे पहले st जो कि स्ट्रीमलेट के अंदर एक फंक्शन है टाइटल, इसके अंदर हम टाइटल डालेंगे हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल, और उसके बाद यूजर से एक इनपुट लेते हैं, इनपुट टेक्स्ट st डॉट, इसके अंदर हमारे पास है टेक्स्ट इनपुट, इसके अंदर मैं लिखता हूं प्रोवाइड कामा सेपरेटेड वैल्यूज, और इसके बाद मैं एक इमेज ओपन करूंगा. तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इमेज, जो हमने पिल्लू से इमेज क्लास इंपोर्ट किया था, उसके अंदर एक फंक्शन है ओपन, और ये इमेज मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ. मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, आप लोग इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो. ओके, सो आई विल सिंपली प्रोवाइड दिस इमेज पाथ दैट इज हार्ट इमेज पैक. अब इस इमेज को मैं ओपन करूंगा st यानी स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी की मदद से. तो st.image इसके अंदर एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं ये इमेज पास करूंगा, विड्थ पास करूंगा फॉर नाउ 200. सो अब देखते हैं कि हमारा वेबसाइट किस तरह दिखाई देता है. तो जाए अपने टर्मिनल में और यहाँ पे टाइप करें स्ट्रीमलेट
रन जो भी आपके इस ऐप का नाम, इस फाइल का नाम है, मेरे केस में ऐप है, ओके, ओप्स, ऐप डॉट रन एंड एंटर। अब ये थोड़ी देर बाद क्रोम में ओपन हो जाएगा, देन वी विल सी फर्दर थिंग्स। Error. Streamlet requires raw Python. Oops, I did a mistake. Streamlet run app dot py, not run again. That was my mistake. I'm sorry for that. तब तक के लिए मैं एक बूंद पानी पी लेता हूं। तो ये आ रहा है, सी दिस इज आवर टाइटल एंड दिस इज आवर सर्च बार, जिसमें अगर कोई इस तरह सर्च मारेगा तो ये हमें डिस्प्ले करके देगा यहाँ पे, और ये इमेज भी आप देख सकते हो। नाउ यू कैन पुट दिस इमेज अबव दिस सर्च बार, ओके। लेट मी क्लोज द फर्स्ट वन। अब मैं क्या करता हूं, चूंकि जो हमारे पास ये वैल्यूज है ये कॉमा सेपरेटेड है, क्योंकि यूजर कॉमा सेपरेटेड फीचर्स डालेगा या विदाउट कॉमा सेपरेटेड, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट टेक्स्ट है इसको सेपरेट करते हैं। तो इनपुट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करते हैं किसकी मदद से, विथ कॉमा, और इसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर करता हूं और इसको नाम देता हूं सेपरेटेड इनपुट, ओके। अब यहां पे मैं ट्राई, यहां पे मैं एरर से बचने के लिए, एरर को हैंडल करने के लिए ट्राई एंड एक्सेप्शन का इस्तेमाल करूंगा। एक्सेप्शन, अब ये क्या होती है थोड़ी देर बाद बताता हूं। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, तो अगर ट्राई ब्लॉक नहीं चलता तो ये एक्सेप्ट में आएगा और यहाँ पे मुझे ये मैसेज डिस्प्ले करके देगा। और स्ट्रीमलेट में हम जब कोई चीज डिस्प्ले करते हैं टेक्स्ट, तो हम st.write लिखते हैं, इनवैलिड वैल्यूज ट्राई अगेन। और अगर ऐसा नहीं है तो हम वही स्टेप करेंगे जो हमने किया। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूं, इनपुट डेटा विल बी इक्वल टू, इनपुट डेटा विल बी इक्वल टू, अब चूंकि यूजर ने जो इनपुट किया है वो इसके अंदर स्टोर है और इसको हमने सेपरेटेड किया और ये इस वेरिएबल sprtd इनपुट के अंदर स्टोर है, तो ये मैं असाइन करूंगा इनपुट डेटा को। मैं इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, सो सेपरेटेड इनपुट डेटा, ये और इसके अंदर डेटा टाइप हम रखते हैं, नो 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 नो, let me check, I made a mistake right here, I can also do it but मैं एक और मेथड इस्तेमाल करता हूँ। सो हम क्या करते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। इनपुट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं यूजर से और इसको हमने कॉमा से सेपरेट भी किया है, तो हमने इस इनपुट को numpy एरे में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं npdf के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, np डॉट, जो हमने उधर नोटबुक में किया था एंड में वही अप्लाई करेंगे एज एरे, और इसके अंदर इनपुट किसके अंदर स्टोर है, सेपरेटेड इनपुट के अंदर। अब इसकी मैं डी टाइप रखूंगा फ्लोट, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। अब इसको हमने रिशेप्ड करना है, सो रिशेप्ड df विल बी इक्वल टू npdf डॉट रिशेप, और इसको मैं npdf पास करूं, नो 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 नो, मुझे -1 एंड -1 हुआ क्या, हमने यूजर से इनपुट लिया, उसको सेपरेट किया। अब इस इनपुट को मैंने numpy एरे इस एरे फंक्शन की मदद से कन्वर्ट करना है numpy एरे में, फिर इसको मैंने रिशेप किया क्योंकि मुझे चाहिए जस्ट 1 इंस्टेंस। तो लेट्स से प्रेडिक्ट करते हैं इस यूजर के इनपुट को, प्रेडिक्शन ऑन दिस डॉट प्रेडिक्ट, इसके अंदर मैं इस रिशेप df को पास करता हूं और इसके बाद मैं चेक करता हूं इफ प्रेडिक्शन इक्वल टू 0
then st dot write this person don't have a heart disease, otherwise this person definitely disease. So st dot write this person have heart disease. तो मैं जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर में और इसको मैं रिलोड करता हूँ। मैं इसके अंदर ये इनपुट डाल के एंटर करता हूँ और ये दिस पर्सन डोंट हैव अ हार्ट डिजीज, परफेक्ट, अमेजिंग। लेट्स चेक अनदर वन, दिस टाइम फॉर द पर्सन हैज अ डिजीज। लेट्स randomly कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल C and paste it right here and enter. So this person have heart disease, perfect. Our model is predicting perfectly. Now we will display performance of our model. तो ये try and accept ब्लॉक मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, आप इसको ना भी करें तब भी चलेगा, क्योंकि मेरा डेटा सेट में कुछ वैल्यूज बहुत ही बेकार हैं। यकीन मानो मैंने बहुत एक्सप्लोर किए बट मुझे नहीं मिले, तो वो कभी कभी कुछ वैल्यूज पे एरर देता है, तो उनसे बचने के लिए मैंने ट्राई एंड एक्सेप्ट का इस्तेमाल किया। अब इन ट्राई एंड एक्सेप्ट से बाहर आके यहाँ पे st.subheader डालता हूं और लिखता हूं अबाउट डेटा और st.write करता हूं मेरा डेटा जो था हार्ट डेटा। अब इसी को रिलोड करते हैं। ओके, दिस इज आवर डेटा। ओके, तो ये हमारा डेटा इसके अंदर आ गया सारा का सारा, आप ये देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने मॉडल ट्रेंड डेटा सेट पे परफॉर्मेंस और जो टेस्ट डेटा सेट पे परफॉर्मेंस है वो डिस्प्ले करना है। सो st.subheader मॉडल परफॉर्मेंस ऑन। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, और इस वीडियो को भी लाइक करो। मॉडल परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग डेटा। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इग्नोर मत करना। और उसके बाद st.write। अब मुझे पता है कि मेरा जो ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी इसके अंदर स्टोर है, तो मैं जस्ट पास करूंगा ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी। आई विल डू द सेम थिंग फॉर कॉपी पेस्ट। I'll do the same thing for model performance on test data, or this time this should be test data accuracy. Okay, अब मैं इसको रिलोड करता हूँ अगेन, और रिलोड करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ। ये हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस भी आ गई, आप लोग देख सकते हो 85, 81 एंड दिस टाइम इसने कम दिया, ठीक है, क्योंकि सम टाइम ये ज्यादा देता है, सम टाइम ये कम देता है। तो ये हमने हमारा जो डेटा सेट है बहुत छोटा है, that's why it's do all these things. So finally we created this. Let me check last try, this one. एक आखिरी कोशिश करते हैं, फिर हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। एंटर। So this person don't have a heart disease, perfect. तो अगर वीडियो पसंद आई है और इसी तरह के मजेदार मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट सीखना चाहते हो तो इस चैनल ChatGPT मास्टर को सब्सक्राइब करो। और मेरे जितने भी प्लेलिस्ट है, मैं इस चैनल में जस्ट प्रोजेक्ट करता हूं, ना कि ट्यूटोरियल। उन सारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, लाइक पाइथन सर्च इंजन डेवलपमेंट, पाइथन चैटबॉट डेवलपमेंट, NLP प्रोजेक्ट्स, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, आगे आने वाले हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्लेलिस्ट आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड वी विल बी सीइंग in the next machine learning project.